सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पे मुत्तफिका राय सुना दी। मुत्तफिका राय के मुताबिक जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट में अपील में शफाफ ट्रायल के बुनियादी हक को मद्देनजर नहीं रखा गया। सजा आइन में दिए गए अदालती ट्रायल के मुनसिफाना उसूल के मुताबिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय देते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, यह 9 रुकनी बेंच की मुत्तफिका राय है। जज हल्फ उठाते हैं कि वो बगैर किसी खौफ और लालच के आइन और कानून के मुताबिक मुकदमात के फैसले करेंगे। हमारी तारीख में चंद ऐसे केसेस हैं जिनसे यह तासुर बनता है कि किसी लालच या खौफ की बुनियाद पर फैसला सुनाया गया। हमें माजी की गलतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि खुद एहतसाबी कर सकें। जब तक हम माजी की गलतियों का एतराफ न करें, हम दुरुस्त समत में आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने मजीद कहा कि आइए आपको सुनवाते हैं। We judges are bound to, quote, do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will. This is our oath of office as prescribed in the Constitution, 3rd Schedule. There have been some cases in our judicial history that created a public perception that either fear or favor deterred the performance of a duty to administer justice in accordance with the law. We must, therefore, be willing to confront our past missteps and fallibilities with humility in the spirit of self-accountability and as a testament to our commitment to ensure that justice shall be served with unwavering integrity and fidelity to the law. We cannot correct ourselves and progress in the right direction until we acknowledge our past mistakes. The advisory jurisdiction under Article 186 of the Constitution requires this court to render an opinion on any, quote, question of law, unquote, of public importance referred to by the President. चीफ जस्टिस ने सदारती रेफरेंस के 3 सवालात के जवाब दिए। पहले सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की राय यह है कि भुट्टो केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई मुनसिफाना ट्रायल के बुनियादी हक के मुताबिक नहीं थी। तीसरे और 5वें सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की राय है कि सुप्रीम कोर्ट इस मरहले पर दोबारा से शहादतें नहीं ले सकती और इसलिए भुट्टो केस के फैसले को वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने तफसीली राय में वजूहात बयान करेगी कि यह केस मुनसिफाना ट्रायल के बुनियादी हक के मुताबिक नहीं चलाया गया। The proceedings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan do not meet the requirements of the fundamental right to a fair trial and due process. The Constitution and the law do not provide a mechanism to set aside the judgment whereby Mr. Bhutto was convicted and sentenced. The said judgment attained finality after the dismissal of the review petition by this court. The reference questions do not specify the principle of law enunciated by this court in the Zulfikar Ali Bhutto case regarding which our opinion is sought. Therefore, it cannot be answered whether any principle of law enunciated in Zulfikar Ali Bhutto case has already been dissented to or overruled. In its advisory jurisdiction under Article 186 of the Constitution, this court cannot reappraise the evidence and undo the decision of the case. However, in our detailed reasons, we shall identify the major constitutional and legal lapses that had occurred with regard to fair trial and due process. So we did not find that the fair trial and due process requirements were met. So that's what we have really focused on. We were not rendered any assistance on this question. Therefore, it would be inappropriate to render an opinion on the Islamic aspects. The late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial and it was not in accordance with the Constitution requirement of due